Since I cannot clear JEE with a very good rank, फर्स्ट ईयर से आपने फोकस करना शुरू कर दिया? when I joined my college, I started learning programming language. C. कौन से बुक्स फॉलो किए थे, कौन से कोर्सेज या फिर कोई वेबसाइट्स की हेल्प ली थी आपने प्रिपरेशन? It's very important to convey your thoughts during the interviews. See, if you know something and you are not able to convey it during the interview, there is no point of you knowing it, right? तो बोले यार रेफरल तो आजकल काम ही नहीं कर रहा है. हाँ, I've just followed this method and actually it worked out. रोड मैप फॉर द सेकेंड ईयर स्टूडेंट. And you can start with any programming language, be it C++, Java or anyone. So it's very difficult कि college के साथ manage करना, but yes, if we want something good, you have to do. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट शो. माय नेम इज अतुल राज एंड इस एपिसोड में हमारे साथ रश्मि मैम है, जिन्होंने अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से 45 LPA का पैकेज सिक्योर किया है एट इंटुइट द वर्ल्ड टेक रियॉन कंपनी. सो ये एपिसोड आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस एपिसोड में हम रश्मि मैम की इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में बात करेंगे. कैसे उन्होंने चैलेंजेस फेस किए, क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो किए, कौन कौन से रोड मैप फॉलो किए टू लैंड दिस ड्रीम जॉब. रश्मि मैम के पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड टिप्स आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप बिगिनर हो या फिर अपने कैरियर को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो. सो स्टे ट्यून टिल दैट, बिकॉज दिस कन्वर्सेशन कैन ट्रूली चेंज द वे यू अप्रोच योर करियर. मैम कैसी हो आप? I'm good. How are you? मैम आई एम ऑल्सो फाइन. मैम कैसी चल रही है अभी आपकी इंजीनियरिंग जर्नी? It's been 2 months only, तो अच्छा चल रहा है. So yeah, yes, I'm kind of enjoying. मैम प्लीज़ आप अपने एजुकेशनल जर्नी शेयर कीजिए, कैसे आपने इतने बड़े माइलस्टोन अचीव किया. Okay, so when I joined my college, since day one I wanted to crack a good offers. तो मैंने वहाँ से like since day one also I started coding, started learning programming languages, and then improving my problem solving skills, and then like later on DSA and interview prep. So yeah, I was focused from starting itself. फर्स्ट ईयर से आपने फोकस करना शुरू कर दिया था? Yes, first year say when I joined my college, I started learning programming language C++. So I learned that in first year and I solved few questions in the first year itself. Later on, I like लाइक जैसे कि अभी अपन कोई भी अगर स्टूडेंट्स अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं तो फर्स्ट ईयर में आते तो उनको पता ही नहीं चलता है क्या करना है, कैसे करना है. तो मैम आपके पास ये पहले से प्री प्लान था या फिर आपके साथ भी सेम सिचुएशन क्रिएट हो रहा? So I would say कि since I could not clear JEE with a very good rank, so I had this thought from since day one that I had to crack a very good offer. So although I had this thought, but since my sister was in IIT, she guided me a lot, and I knew what to do and how to do. Although I did it by myself only, but she guided me throughout the journey, and she told me like what to do, where to follow, how to follow, and all. मैम आपके पास पहले से एक मेंटर थे? Yeah, she's my life mentor, she's my career mentor and all. ओके मैम, तो मैं आपने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे, लाइक ऐसे कौन से बुक्स फॉलो किए थे, कौन से कोर्सेज या फिर कोई वेबसाइट्स की हेल्प ली थी आपने प्रिपरेशन में? कोर्सेज मैंने ऐसा कोई पेड कोर्स फॉलो नहीं किया था. आई फॉलोड GFG लॉट, मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स GFG से करे थे, इधर इट बी DSA, CS सब्जेक्ट्स और एनीथिंग. मतलब आई फॉलोड GFG thoroughly. Also, if I talk about YouTube channel, then for DSA I follow Take You Forward's channel, that's Striver's channel, and also there's a YouTuber named Aditya Verma. He had also like few videos, tags, binary search, and DP. So I followed his videos. लाइक आपने यूट्यूब वीडियोस के बारे में बताया एंड आपने चीट शीट जो भी लगाई अपने स्ट्राइवर्स के, टेक यू फॉरवर्ड्स के अपने वीडियोस भी देखे थे एंड GFG प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया. मैं आपने कॉलेज एकेडमिक से भी कोई हेल्प लिया था अपनी प्रिपरेशन में? Yes. Book I did not follow any, I guess. Yes. But we had a very good teacher in college for OOPS. So yeah, my OOPS basic concepts were clear from him only. So मैंने उनसे like OOPS I did not prepare like very much during interview preparation, because when जब college में पढ़ाया गया था, then I used to prepare that. ओके, आपने रिवाइज So वगैरह I करना स्टार्ट कर दिया?
Yes, तो I would say yes. College programs की वजह से oops तो एक helpful था. Then I thoroughly revised it later, but yeah, I prepared. अब एक ऑडियंस क्वेश्चन भी आया था डीएसए एंड UPS से रिलेटेड, तो मैं इसे भी पूछना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट्स की क्वेश्चन है कि आपने कहाँ से और कैसे आपने डीएसए और UPS की प्रिपरेशन की थी? Okay. So if I talk about oops, तो मैंने बताया ना oops, we had a very good teacher in college. तो मेरे बेसिक्स तो वहाँ से क्लियर हो गए थे. आफ्टर दैट मैंने कोई वीडियो कॉलिंग नहीं की, मतलब मेरे को इतनी नीड नहीं हुई. आई वुड से मैंने कॉन्सेप्ट्स फॉलो करे थे जीएफजी के, इंटरव्यू बिट के और जावा पॉइंट के. लाइक बहुत सारे कॉन्सेप्ट सारे मेंशन है, तो आई फॉलोड फ्रॉम दैट वेबसाइट्स. ऑल्सो क्वेश्चंस भी है वहाँ पे, काफ़ी इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, तो you can check for that. DSA, I would say there's a way to learn DSA. First, you need to learn the concept, like what are the data structures you are learning, and then you have to practice questions from that. So for concepts, I did not follow any video as such, but yes, I'm someone who used to follow documentation much, so I found like documentation easier to follow. Yeah. So I followed yes GFG and interview bit and Java point, like their documentation for data structure. Also, video wise, as I mentioned, Take Your Forward channel is really good for every content, like every data structure videos he had, like on his channel is really great. So I followed his videos. Also, like I followed Aditya Verma's playlist for DP, Stack, Find Research and others. ओके मैम, तो आपने तो कोडिंग से रिलेटेड आपने वीडियोज़ एंड रिसोर्सेज के बारे में बताया. लाइक जैसे कि आप जैसे स्पीकिंग स्किल्स भी होती है, लाइक सॉफ्ट स्किल्स जिसको अपन कहते हैं, एंड कॉलेज में इसके लिए प्रिपरेशन भी कराई जाती है. तो मैम ये सॉफ्ट स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट थी मैम प्लेसमेंट टाइम में आपके लिए? No, I did not prepare it for soft skills as much, but I would say it is important. Like, it's very important to convey your thoughts during the interviews. Like, see, if you know something and you are not able to convey it during the interview, there's no point of you knowing it, right? So it's very important to convey whatever thoughts you are having during the interview process. I would say it's important, but it's not the only thing. Like, it's not something that you need to prepare very well. But it's good to have good soft skills, good communication skills, so that you can convey your thoughts. That's it. It's not that you are being hired as a HR or something that you need to be very good in communication. You just need to convey your thoughts, whatever you are having, your solutions, your approaches during the interview. And if you are like facing problem in it, you can practice by speaking with your friends or during or in front of mirror or something, like in daily activity. ये पॉसिबल नहीं हो पाती है मैम. Yeah, I know what मजाक उड़ाते हैं दोस्त, but हाँ ठीक है. I found it. I used to talk in English. Even if they used to make fun of me, I used to talk to them in English. मज़ा आता था. I found it funny. Yeah. ओके मैम, तो जैसे कि आपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए थे कॉलेज टाइम पे जो सीवीज में अपन मेंशन कर सकते हैं, मैम उसके बारे में कुछ बताइए हमें. Yes, I would say कि whenever you're applying for any MNC or any product-based company, it's always better to have good and unique projects. Like, see, there will be lots of students who will put like clone or e-commercial websites projects in their resume. In order to make a CV stand out in front of all the other students, especially when you're applying for off-campus, you should have something like projects in your resume. I'm not saying it should be a very high level or advanced level project. It should be your personal project. Like it should not be showing that you're copied it from somewhere. So it's always better to keep your project unique, personalized. And also there's no foundation of tech stack. You can use web development, you can make Android projects, you can make an ML projects. So yeah, I had my projects which were actually Android projects and also ML projects. My resume. आपने ये प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, एंड आपने मैम बीच में ऑफ कैंपस के बारे में बताया कि अपन ऑफ कैंपस में अप्लाई करते हैं तो उसमें लाइक अपना प्रोजेक्ट थोड़ी यूनिक होना चाहिए, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. हाँ, लाइक जैसे कि क्लोन्स बना लेते हैं सब लोग, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट होती है जो गिट से उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपन. तो लाइक आपने ऑफ कैंपस की बात की है, प्रोजेक्ट्स की बात की,
तो लाइक जैसे कि आपने जो पैकेज लिए थे ऑफ कैंपस के थे, तो एंड आपने कुछ जर्नी भी शेयर किया कि हाँ मैंने यहाँ से कोर्सेज किया था, लाइक आपने रिसोर्सेज जो डॉक्यूमेंटेशन फॉलो किए थे। बहुत लोग तो ये करते हैं लेकिन उनको रिसोर्सेज के बारे में पता नहीं रहता है, कैसे ऑफ कैंपस अप्लाई किया जाए, कैसे अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया जाए। तो मैम इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। Yes. So there is a channel, the name Arsh Goel. Like there's a YouTube channel also, or he has like Telegram channel also. मैंने बहुत लोगों को बताया भी. He always used to put all the opportunities. There's also a Telegram channel with the name Krishna. इसके अलावा भी there are lots of people they used to post regular off-campus opportunities. You just need to follow them. So it's not very hard to have like off-campus links. Yes, it's like quite difficult. There's no like telling you have to just search over there. You have to find people who actually puts opportunity links. So once you follow them, now you get off-campus links like on a daily basis. But if you follow now, you'll get every on feed. So you just need to apply on those links. Just make sure that would be official links. And also, I want to mention very specifically, there is no point of writing hashtag interested after any post on LinkedIn. There is no point of writing. Just click on that link, whichever is mentioned in that post, and that will be that will keep you through that the website. Apply from there only. ओके, मैं आपने एक प्लेटफॉर्म का नाम यूज़ किया, लिंक्डइन। लाइक अपन लिंक्डइन में भी जॉब बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, तो उसमें एक परफेक्ट वे क्या होता है अप्लाई करने के, जैसे कि आपने बताया कि अपन हैशटैग इंटरेस्टेड लिखते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मैम इस पर भी कोई स्पेसिफिक वे है अपन जैसे अप्लाई करें और चांसेस सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़? देयर इज स्पेसिफिक वे, बताती हूँ। मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो डेली पोस्टिंग्स करते हैं जॉब की, तो उनको फॉलो करो और उनकी पोस्ट में जॉब लिंक मेंशन होती है, तो वो ऑफिशियल वेबसाइट की जॉब लिंक होती है। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट ना, तो तुम्हें जॉब आईडी मिलेगी, जॉब नेम मिलेगा, विच एवर कंपनी इज फ्रॉम, ठीक है। तो व्हेन यू गेट दैट, तुम उस कंपनी के एम्प्लॉयज को कनेक्ट कर सकते हो एंड राइट अ फॉर्मल मैसेज दैट हाई आई एम दिस, आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस रोल, mentioning that job ID and job link also, and also give your resume link that this is my resume link, find me suitable enough, please provide me referral for the same. If you will do that, you'll have like high chances, if that person would refer you, तो you'll have high chances कि your resume would be seen. It's not sure कि तुम्हारा resume shortlist हो ही जाएगा, but at least there's a guarantee कि तुम्हारे resume को एक बार review करा जाएगा। ओके, लाइक रेफरल के थ्रू अपन जाए तो हाँ, इतनी भीड़ है, एटलीस्ट रिव्यू करा जा रहा है, दैट्स ओनली अ गुड थिंग है। रेफरल के बारे में आपने बताया, तो जैसे कि मैंने कुछ अपनी फ्रेंड से भी पता किया, लाइक हाँ जो अभी लाइक बैंगलोर में या फिर कोई पुणे में, हैदराबाद में, उनसे पूछा कि हाँ भाई क्या रेफरल का क्या सीन चल रहा है, तो बोले यार रेफरल तो आजकल काम ही नहीं कर रहा है। मतलब कि कुछ मतलब पहले तो था कि हाँ अपन रेफरल करते तो अपने को कुछ रहता था कि हाँ कुछ हो सकता है, लेकिन अब तो रेफरल भी इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि उसका कोई मतलब ही नहीं बन पा रहा है। एंड यहाँ पे देख रहा हूँ ऑफ कैंपस अगर अपन ट्राई कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो रही है। एक बार ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लो तभी ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई करो। तो मैम ये रूमर्स है या फिर ट्रुथ है? दैट्स ट्रू, क्योंकि बहुत सारे लोग रेफरल ले रहे हैं, तो फिर ऐसा कुछ बहुत स्टैंड आउट वाला पॉइंट डिफरेंस नहीं रह रहा है। बट अगेन आई वुड only thing you can work on yourself is your resume. Just build your resume as कि रेफरल लगने के बाद या फिर कोई भी अगर रेज्यूमे देख रहा है तो उस पर्सन को आपको मतलब वर्क आपको लेना पड़े, यू नो, यू हैव टू मेक योर रेज्यूमे स्टैंड आउट विद अदर स्टूडेंट्स। तो वर्क हार्ड ऑन योर स्किल and put all you have in your resume. Like resume also has its format. So build your resume especially when you're applying for off campus. I don't think on campus mein resume plays a lot of role, but yes, off campus it's important to have a very good resume. कि मैम लाइक अपने को एक यूनिक रिज्यूमे बनाने जिसमें अपन हाँ प्रोजेक्ट्स भी अपने यूनिक्स रहने चाहिए एंड स्किल्स मैटर्स करने चाहिए। एंड हाँ अगर कोई अपने रिज्यूमे पढ़ रहा है तो उनको लगना चाहिए एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या इसमें। Exactly, तुम्हारी अचीवमेंट्स होनी चाहिए, मेंशन होना चाहिए, ऐसा लगे कि हाँ स्टूडेंट ने बाकी 3-4 जो भी इंजीनियरिंग के ईयर्स हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, अपने स्किल्स अच्छे से इम्प्रूव करें। तो इफ विल टेक रेफरेंस विद अ वेरी गुड रेज्यूमे देन इट्स वेरी हाई चांस कि वो आपको कोडिंग लिंक आ जाएगी, टेस्ट लिंक आ जाएगी।
Yes. Also, I want to tell you कि reference से direct interview calls नहीं आते हैं. I have heard people saying कि direct interview आ जाता है या फिर direct selection हो जाता है. No. The reference just guarantees कि your resume will be viewed by the HR people of the company. And there was an audience question like how to grab the internship opportunity while doing web development. Okay, so if you're doing web development, so I believe you might be interested in the internships of the web development itself, right? So while doing web development, you must have created some projects or maybe your portfolios or something. So I believe if you'll apply for web development internships, there is a column for your portfolio link or your projects link also during the apply link also. So put that in resume. Also, just look for the off-campus opportunities, either on LinkedIn or on other websites. Since I have not followed other websites for job openings, but I've heard like internship and other websites are also there. But Naukri.com and other, but I have not followed them. So I believe ki you should look for the openings there. Because I believe on LinkedIn you find many like specific web development openings. But yeah, maybe I was not interested in those roles. But yeah, you can apply with a good resume with projects. ओके मैम, जैसे आपने एक प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया, पहले तो आपने लिंक्डइन मेंशन किया एंड आपने और से प्लेटफॉर्म्स एक्सपोज नहीं किए, बट आपके अकॉर्डिंग कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपन रेज्यूमे या फिर कुछ अगर सबमिट करते हैं तो हाई चांसेस है सिलेक्शंस होने के? यार मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, बट हाँ आई जस्ट फॉलोड दिस मेथड एंड एक्चुअली इट वर्कड आउट कि आप लिंक्डइन पे ओपनिंग्स देखो, जस्ट बिल्ड अ गुड रेज्यूमे, कनेक्ट द पीपल ऑफ दैट सेम कंपनी और उनको फॉर्मेट में आप फॉर्मली मैसेज डालो एंड दे वुड रिप्लाई बैक, बिकॉज उनका भी फायदा है, दे आल्सो वांट की कैंडिडेट विल बी राइट. तो आप वो उसको उनको भेजो एंड दे वुड बी प्रोवाइडिंग यू रेफरल अप्लाई टू दैट. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ऑफ कैंपस रिलेटेड. अपन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अगर रहते हैं तो उनको लाइक 9 to 5 तो उनका कॉलेज रहता है, फिर से कुछ क्लब एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाते हैं. तो आपने अपने टाइम को कैसे हैंडल किया एंड कैसे अपने वर्कलोड को संभाला और कैसे आपने ऑप्टिमम वे में प्रिपरेशन किया? Okay, so during my first and I believe first year sometime मैंने ज्वाइन करा था वॉलीबॉल, मैं जाती थी खेलने. आई फाउंड इट सो डिफिकल्ट कि आफ्टर कॉलेज आप गेम्स के लिए जाओ, उसके बाद डेफिनेटली यू विल नॉट गेट एनी टाइम लाइक टू स्टडी एंड ऑल. तो आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट. तो मैंने फिर बाद में छोड़ दिया. मैंने सोचा कि नहीं यार दैट्स सो इम्पोर्टेंट, तो मैंने छोड़ दिया. आई एक्चुअली अप्रिशिएट द पीपल who actually manages both the things, like really good. But yeah, that was not possible for me. I had to choose one. So yeah, I dropped that game. तो हाँ, मैंने ऐसे टाइम मैनेजमेंट की बात बोलूँ तो yeah, I used to go to college on a regular basis, like not on every day, but yeah, most of the days. So I had this thing now that during my college hours itself, I used to do all my assignments. Even if I used to sit on first bench, I used to write all the assignments and all. Like sometimes people teachers used to say me कि यार मत करो and all, but ठीक है, I had to manage everything that time. So I used to write my assignments during my college hours itself. After my college hours, I used to make to-do list and to do things on my day. So I always had this thing of writing down. Either I have to solve some questions or learn any concepts. So I always had this to do things in my list. So या तो मैं questions करती थी, या तो मैं कुछ concepts करती थी, या तो मैं कुछ पढ़ती थी, लेकिन मैं हमेशा कुछ ना कुछ अपना पढ़ती थी, not just की college की studies and all. हाँ, तो I would suggest everyone कि थोड़ा me time या spare time you have to give to your preparation from like 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है. It should not be like कि टाइम दो. It should always be कि कितना अमाउंट में कितना पढ़ना है, कितना चीज़ें टॉपिक्स कितनी कवर करनी है. तो फॉलो दैट आफ्टर कॉलेज आवर्स. हम 1 घंटा भी अपन अगर प्रिपरेशंस के लिए देते हैं तो लाइक सफिशिएंट है. या ऑल्सो अगर कॉलेज में भी ऐसा नहीं होता कि पूरे टाइम पढ़ा रहे हो. कॉलेज में भी ऐसा होता है कि तुम्हें थोड़ा टाइम तो मिल जाता है. तो अगर तुम्हारे पास असाइनमेंट नहीं है या फिर कुछ काम नहीं है तो लाइक टेक अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ द लॉजिक एट लीस्ट. अगर तुम्हें कोड लिखने का लैपटॉप नहीं है तुम्हारे पास या कुछ भी अभी
क्लास चल रहा है, तो एटलीस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ द लॉजिक कि आप क्या क्या कर रहे हो. इंग्लिश कोर्सेज अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं उस टाइम. या आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कॉलेज के साथ मैनेज करना, बट येस इफ यू रियली वांट समथिंग गुड यू हैव टू डू इट. यस मैम. लाइक आपने फर्स्ट ईयर की जर्नी बताई, तो लाइक मैं एक क्वेश्चन है हमारे पास, ऑडियंस क्वेश्चन, कि प्लीज शेयर द रोड मैप फॉर द सेकंड ईयर स्टूडेंट, देन व्हाट दे हैव टू डू इन देयर सेकंड ईयर. Okay, so I believe if you are in second year and you haven't started coding yet, then you can start with any programming language, be it C++, Java or anyone. So just learn the programming language and write some basic codes in that language. मतलब अगर सेकेंड ईयर में हो तो इतना तो आना चाहिए कि तुम्हें एक लैंग्वेज आ रही है और तुम बेसिक कोड्स लाइक वेरी बेसिक वंस, कि आप सम ऑफ 3 numbers और एनीथिंग लाइक बेसिक, सो दैट सी हम कोडिंग बचपन से नहीं जानते हैं, राइट? तो हमने कोडिंग स्टार्ट ही कॉलेज में आके किया ना, तो इट्स हाँ, तो फर्स्ट ईयर में यू कैन एक्सप्लोर कि कैसे कोड लिखते हैं, कैसे मेन फंक्शन होता है, कैसे आउटर फंक्शंस वर्क करते हैं. तो आई बिलीव फर्स्ट ईयर इज ऑल अबाउट नोइंग दैट ओनली थिंग, कि तुम्हें ये सारी चीज़ें पता चल जाए. सेकेंड ईयर में यू हैव टू बी फेमिलराइज विद ऑल द बेसिक क्वेश्चंस, and also you can start with any projects because later on you won't get time for making projects, for building projects, क्योंकि आपको फिर इंटरव्यू आ जाएगा, you have to prepare for that. So I would say second year improve your problem solving skills. अगर DSA बहुत नहीं करें, start DSA and yes, build some good projects, start learning any tech stack and make some good projects. ओके, लाइक अपन प्रोजेक्ट बनाना सेकंड ईयर में स्टार्ट करना पड़ेगा. हाँ, मतलब बाद में यू वोंट गेट टाइम. फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में यू विल हैव योर प्लेसमेंट्स, राइट? थर्ड ईयर में आई प्रेफर सेइंग कि यार DSA करो, क्योंकि DSA इज सो इम्पोर्टेंट कि पूरा थर्ड ईयर यू कैन ग्राइंड ऑन दैट. सो या जैसे कि हम कॉलेज में देखते हैं, लाइक मैम व्हाट्सएप पे इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ आती है, कहाँ आपने वो 5 फ्रेंड्स को शेयर करने हैं, उसके बाद आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी. तो मैम ये सब इंटर्नशिप क्या रेलिवेंट रहती है, आपने रेज्यूमे को इफेक्ट करती है क्या? I would say कि whenever you're looking for any internship, just see कि तुम्हारा काम क्या है वहाँ पे. It could be 2 kind of internships, paid or unpaid. So even if it's not paid and you're not getting paid for any internship, but if the skill set you need to acquire, वो skills use हो रही हैं. For example कि तुम्हें वहाँ पे web development का काम है, कोई website बना रहे हो, you're learning something. So it's okay to do unpaid internship in second year or third year. At least you learn something, right? बट अगर दूसरी टाइप ऑफ इंटर्नशिप से लाइक प्रमोट कर रहे हो किसी को, एडवर्टीजमेंट का है, डिजिटल मार्केटिंग का है, यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग और उसके लिए तुम्हें पैसे भी मिल रहे हैं, तो भी उसको करने का कोई मतलब नहीं है. सो इट्स नॉट टू इन्वेस्ट योर टाइम एट सम थिंग्स जो तुम्हें चाहिए ही नहीं या फिर जो तुम्हें इम्पोर्टेंट ही नहीं है. सो लोग क्या करा रहे हैं वो इंटर्नशिप में, लाइक हाँ, आपने डोमेन से रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहा है. हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि लाइक इफ योर फ्यूचर तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, तो इट्स नो पॉइंट तुम मार्केटिंग या फिर कुछ और कर रहे हो. अगर तुम्हें पैसे मिल भी रहे तो भी अभी करने का कोई सेंस नहीं है. इससे बेटर है कि तुम स्किल्स इंप्रूव करो ताकि फ्यूचर में तुम्हारा अच्छा हो जाए. यस, मेजर फोकस अपने स्किल्स में करने पड़ेंगे. यस. एंड लाइक अभी भी लाइक अगर जैसे टायर 3 कॉलेज के बारे में अगर बात करें मैम, तो अभी 4th ईयर के स्टूडेंट्स ऐसे भी रहते हैं कि हाँ, जिन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मतलब कुछ नहीं कर पाया लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, मैम उनको अभी क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि हाँ वो कुछ बेटर प्लेस पे प्लेस्ड हो जाए, वो बेटर कंपनीज में प्लेस्ड हो जाए? Yeah, that's true कि in tier 3 colleges, people are not aware of the opportunities, of the roadmaps, maybe what to do. So even if you're in 4th year, you can look for any good opportunities that are basically coming on in your campus. Also, there are mass hiring companies as well. So you can focus on that, companies like TCS and all. So abhi ke liye, like do whatever preparation you can in the very short time. Prepare DSA, jitna kar pao. Prepare coding subjects like OOPS, DBMS, operating systems and all. Jitna bhi ho paye. Also like practice a lot of questions from lead code. Also jo bhi mile, just go into that company. And also you can switch later on. I have seen many people who actually switched to a very good company from coming from a service-based company to a very good product-based company. So it's just a matter of 6-month preparations. You can do well.
ओके लाइक हाँ अपन 6 मंथ में कुछ फोड़ सकते हैं. Yes, अगर अभी के लिए एक अच्छी कंपनी नहीं भी मिल रही है then it's fine to join it and also like continue your preparation like especially DS. मैं आप जैसे कि आप डीएसए पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए कि हमने को डीएसए करना ही करना है. लाइक एक ऑडियंस क्वेश्चन भी है मैम अपना कि लाइक कौन से प्लेटफॉर्म से डीएसए क्वेश्चंस करने चाहिए, क्या क्या कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट हमें पढ़ने चाहिए प्लेसमेंट्स के लिए. Fine. तो DSA just first step is to make your concepts clear कि जो भी डेटा स्ट्रक्चर है concepts clear करो. If you need help from any YouTube channel, you can refer like whatever channel you feel suitable. Like I followed Take Your Forwards channel, but you can refer to any other channel if you find it good enough. Also, after making your concepts clear, you need to practice a lot of questions. Because DSA is only the 30% of knowing the concepts. It's more about practicing questions. So I followed GFG and lead code mostly to practice questions. Also, कि GFG and lead code पे daily questions आते हैं. Problem आते. Yes, तो आप tricks बना के वहाँ पे daily questions कर सकते हो. Just to also to track your consistency कि वो टूटे ना. Also, the best way to practice questions is to by giving your contests. Like sometimes हम practice कर रहे होते हैं questions और हम questions कर लेते हैं but later हम इन सी के बाद में हमसे वही questions नहीं होते. तो it's not about कि हमें वो question याद नहीं करना है. We just know the concepts and the logic. तो it's best way कि आप contest से practice करो. It's okay to solve even 1 question, 2 question during the contest. And after contest उसको solve करो. We need to solve after contest कि ये क्वेश्चंस क्यों नहीं हुए या फिर मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा था या मैं ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं लिख पाई. तो कॉन्टेस्ट से प्रैक्टिस करना इज़ द बेस्ट वे. एंड व्हेनेवर यू सी कि किसी ने बहुत अच्छा कुछ क्रैक करा है या फिर किसी ने भी अच्छे कोडिंग कॉन्टेस्ट या फिर ऑनलाइन टेस्ट निकाले हैं तो दैट पर्सन मस्ट हैव गॉन थ्रू ऑल द कॉन्टेस्ट थिंग. तो कॉन्टेस्ट देना इज़ द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस. मैम अभी तक जिससे हमारी जितनी बात हुई थी उससे कंक्लूजन ये निकला कि अपने को बेसिक डीएसए पे फोकस करना है बहुत ज़्यादा एंड देन आफ्टर अपने को प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करना है उसमें. हाँ, yes. एंड लाइक मैंने अभी आपसे पूछा था लाइक कोई कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिस पे अपने को फोकस करने हो लाइक प्लेसमेंट्स के प्रिपरेशन करने के लिए. Yes. तो मैं आपको वो बताती हूँ कि इंटरव्यूज में एक्चुअली क्या पूछते हैं. तो इंटरव्यूज में 3 सेक्शंस में ही डिवाइडेड होते हैं पूरे इंटरव्यूज. बेसिकली HR क्वेश्चंस इतना नहीं पूछते हैं क्योंकि आई डोंट नो अबाउट अदर कंपनीज पर MNCs बहुत HR क्वेश्चंस नहीं पूछती है, 1-2 क्वेश्चंस ही पूछती है. ऑल्सो एप्टीट्यूड राउंड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है MNCs में. यू जस्ट हैव टू गो थ्रू 1 कोडिंग राउंड जिसमें ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसमें कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं. यू नीड टू सॉल्व देम इन सम स्पैन ऑफ टाइम. आफ्टर यू क्लियर द कोडिंग टेस्ट यू विल हैव टू गो थ्रू द इंटरव्यूज. And in interviews, basically interviews are divided in 2-3 sections. The first is the DSA section. You'll be asked 1 or 2 DSA questions each round depending on the time limit. And you have to solve it by sharing your screen. You just need to, sometimes you need to write the complete code and sometimes only the logic, depending on the interviewer's choice. After this, you have like CS subject sections. जिसमें तुमसे OOPS के क्वेश्चंस, OS के क्वेश्चंस एंड SQL क्वेरीज पूछते हैं. एंड द थर्ड सेक्शन इज प्रोजेक्ट सेक्शन इन विच यू विल बी आस्क्ड everything about your projects, like challenges you faced. They can ask you any small question regarding your project, like how you implemented this logic, how you implemented that part, what challenges you faced during the implementing of this thing and all. So they can ask anything about your project. So basically interviews are revolved only these 3 sections. Okay, like कुछ technicals interview रहते हैं, then after HR rounds. हाँ, मतलब HR rounds mostly नहीं होते या फिर अगर होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं. MNCs में they just ask you 1 to 3 questions. Why did you want to join this organization? Where do you see yourself after 5 years and all? So they majorly focus on technical questions. टेक्निकल राउंड पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हाँ अपने को लॉजिक बिल्डिंग आ रही है नहीं. Yes. मैम देयर इज लाइक ऑडियंस क्वेश्चन व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस लाइक हाँ कि मैं अभी कोई सर्टिफिकेशंस करना चाहिए, कौन से सर्टिफिकेशंस नहीं करने चाहिए. बिकॉज लाइक अपने को एक सेक्शन रहता है रिज्यूमे में सर्टिफिकेशंस, उसमें अपने को
बेसिक कौन कौन से सर्टिफिकेशंस करने चाहिए? सो बेसिकली मैंने कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया था. आई जस्ट डिड RHCSA क्योंकि वो कॉलेज में करवाया गया था. ऑल्सो आई डिड नॉट मेंशन इट माई resume एंड सच. तो क्योंकि आई डिड नॉट was not well prepared for that Linux questions, so I did not write it. So basically, certification thing is your wish. If you want to include it, you can. Again, certifications is good to have, but it's not mandatory to have. Like whatever you write in resume, वैसे ही उससे questions पूछेंगे. तुमने certification किया हो तो, ना किया हो तो. So if you have good knowledge about that particular topic or that particular subject, अगर तुमने कोई भी certification नहीं किया है, then it's all good and fine. मतलब there is no such need to being certified. You just need to have good knowledge of that subject. Certificate किया हो तो भी, नहीं किया हो तो भी. लाइक हाँ, अपने को सर्टिफिकेशंस करना उतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है जितने अपन सोचते हैं. हाँ, मेजर इंपॉर्टेंट है स्किल्स इंप्रूव करना. तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए. Yes. जैसे कि देखते हैं कॉलेजेस में बहुत बच्चे इधर उधर से सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं, बट उनको उस डोमेन के बारे में कुछ नॉलेज नहीं रहती है. इस कारण रिजेक्शंस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. और फिर इंटरव्यूज में जब वो पूछे जाएंगे, you won't be able to answer. कि मैम तो बहुत सारी बात हमने की प्लेसमेंट से रिलेटेड एंड BSA से रिलेटेड. लाइक मैम, आई वांट टू आस्क फॉर द लाइक एडवाइस यू वांट टू गिव द ऑल द इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हु इज pursuing their computer science stream right now. Okay, so I want to say if you're really dreaming for something big, there's no need to have fear and all. Everyone is like you only. Everyone faces failures. You just need to be consistent about your studies and hard work. And if you really, really want something, everyone, even the whole universe will help you. So you just need to work hard and just don't stop dreaming and all. Just dream big and work really hard for it. You'll be able to achieve it. जैसे आपने अपनी जर्नी एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट टायर 3 कॉलेज से स्टार्ट किया था एंड देन एट द एंड आपने 45 LPA का पैकेज क्रैक किया था. लाइक हाँ, आपने को तो पता है यार कि उन्होंने लाइक 45 LPA पैकेज टायर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स रहती है. इट्स लाइक माइलस्टोन ना. लाइक हमें तो पता लगा कि इससे कोई भी स्टूडेंट साथ आया है तो 45 LPA का पैकेज लग गया, मस्त है, ठीक है. बट लाइक उनके पीछे हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे. लाइक बहुत से सिचुएशंस ऐसे क्रिएट भी होंगे कि जिसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता होगा, फिर भी उसको हैंडल किए तब जाके हम इस लेवल पर पहुँचे. तो मैम प्लीज़ आप अपने एक समरी देना चाहते हैं लाइक फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर कैसे कैसे आपके प्रिपरेशंस के लिए आपने कैसे कैसे चैलेंजेस आए उसे ओवरकम किया कैसे आपने? So it's true for a tier 3 students very difficult to grab an offer also 2024 batch. Like we had like session and everything now. But yes, since day when I was very focused that I want to achieve something good. Also, there were lots of points in my life, in my engineering life during college days. There were lots of people who used to mock कि यार इतना पढ़ के क्या करेगी, इतना पढ़ के क्या करेगी. You are the same place जहाँ पर हम हैं. तो yes, it was full of challenges. बहुत बार ऐसा लगा कि यार नहीं हो पाएगा. It was difficult क्योंकि there were no people around me जो इतना प्रिपेयर कर रहे हो या फिर तुम्हें ऐसा देख के जो पढ़ने वाली चीज़ है या फिर देख के जो सीखने वाली चीज़ है वो कॉलेज में नहीं हो पा रहा था मेरे साथ. बट आई हैड support of my parents, my family. Also, I had few good friends who supported me in my journey. So I took help from them. I used to motivate by looking at them. So it was full of challenges and all. बहुत सारे assignments and lab records and college activities and all. But yes, every day I used to remind that what I actually want to do in my life. What is my dream? What I have to do it. So even if there were some points, yes, there were some points which whenever I felt that कि नहीं हो पाएगा, I had to drop it and all. But ठीक है, मैं वापस start करती थी. I used to prepare again with the same motivation. So I did not stop. जैसे आपने बताया कि आपके फ्रेंड्स भी आते थे, बोलते थे यार इतना क्यों पढ़ाई कर रहे हो, फिर भी आप बढ़ती रहती थी. लाइक हमारे साथ भी ऐसा हुआ, ठीक है. बट हाँ, हम उस समय पढ़ाई ना करके छोड़ देते, चलो यार ठीक है बाद में कर लेंगे, अपन घूम लेते. लाइक मैं भी 4th ईयर में हूँ, लाइक मैं भी सफ़र कर रहा हूँ. मुझे पता चल रहा है कि हमने कहाँ कहाँ पे लाइक किया. तो मैम इस पॉडकास्ट के थ्रू लाइक हाँ बहुत से स्टूडेंट्स को पता चलेगा यार कि अपन इस मोमेंट पे अपने को पढ़ाई करनी है. हाँ, ऐसी बात नहीं कि अपन घूम नहीं सकते, एंजॉय नहीं करेंगे, लेकिन हाँ रोज़ का ऐसा नहीं होना चाहिए.
जैसे आपने बहुत सारी स्टोरी शेयर की, तो मैम हाँ, इस पॉडकास्ट के थ्रू उनको बहुत से पता चला होगा कि अपने को कहाँ पे टाइम देना है, कहाँ पे नहीं देना है। थैंक यू सो मच इतने इन्फॉर्मेशन देने के लिए।